Hello everyone, a very good morning to all of you. Dear students, in this part I would like to give you the most important questions related to poem childhood. First of all, we take some textual questions. Let's see the first question. The first question is identify the stanza that talks each of the following. Each of the following. The first thing जो है talk about individuality. Second, rationalism. And third, hypocrisy. See, the poem Childhood is totally about the loss of the spring of life. And you know, spring of life is the prime time of life. And you know the prime time of life? Exactly the childhood. But here on in this poem, the poet doesn't, consider the exact time. He is, thinks over his lost childhood and wonders about the moment where he lost it. So, as I earlier mentioned in the previous part, that in the first stanza, because you have to mention, identify the stanza that talks each of the following. वो है कौन सा स्टेंजा है इस पोएम में जो इंडिविजुअलिटी की, व्यक्तिगत होने की बात करता है, जो तार्किक होने की बात करता है. रैशनलिज्म मीन्स तर्कवाद, जो लॉजिक की बात करता है. और वो कौन सा स्टेंजा है इस पोएम में जो हिपोक्रेसी, पाखंड की बात करता है. तो मैं आपको पहले ये बता देना चाहूंगा इसमें, डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, इफ यू हैव वॉच्ड द कंप्लीट portion of the previous video, you certainly be able to, or in the position to identify the stanza where upon individuality is mentioned, where upon the rationalism is being shown, or in which stanza hypocrisy is being seen in that poem. लेकिन मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में, संक्षेप में बताना चाहूंगा कि the first stanza is all about cease to be 11 about hell and heaven. About hell and heaven. Okay. The second thing, in the second stanza, it is all about that about adults, the perspective of adults. Okay. And this third stanza is all about the mind. मैं यहाँ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ that in the very first stanza the poet creates the situation that it may possible that may a childhood be lost when he covered the age of 11 years. When he completed the age of 11 years, maybe that particular time he lost his childhood. And in the same stanza he also talks about hell and heaven. It is a big question mark of existence of hell and heaven, and it is the talk of rationalism. It is the talk of the rationalism कि स्वर्ग है या नरक है का, इसका existence है कि नहीं है, because there is no mention of these things in the book of geography. ज्योग्राफी की, भूगोल की किताब में किसी भी इस तरह का वर्णन नहीं है कि स्वर्ग और नरक का वर्णन किया गया हो. That's why it is being very clear here on that it is the thing of rationalism. It's the thing of logic. ये लॉजिक की बात इस स्टेंजा में की गई है कि स्वर्ग और नरक का एग्जिस्टेंस है कि नहीं.
क्या एग्जैक्टली 11 ईयर्स कवर करने के पश्चात उसका बचपन चला गया। और एक जो सेंटेंस आई वुड लाइक टू कोट फ्रॉम हियर ऑन दैट शोज एग्जैक्टली यू नो द logic that could not be found in book of geography. Okay, और इसी के साथ जो नेक्स्ट सेंटेंस है इस स्टेंजा में वो भी मैं कोट करना चाहूंगा, एंड देयरफॉर could not be found in geography, and therefore could not be. It means that it is the thing of logic that perhaps these places may not exist in the practical world. Practical world में इसका existence नहीं है। तो सीधी सी बात है, let me tell you the first thing, the first stanza is totally devoted to rationalism, तार्किकता से संबंध रखने वाला है। जो सेकंड स्टेंजा है उसमें किसकी बात की गई है, उसमें अडल्ट्स की बात की गई। वो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। और मैं कोट करना चाहूंगा सेंटेंस आपके लिए ताकि इजी बन जाए। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड अबाउट द adults, was that the time I came to know about the adults that were not all they seemed to be, means जैसे वो दिखाई देते हैं वैसे हैं। And exactly they are preaching about love, they pretending, but they exactly didn't show such type of such type of thing in their practical life. तो दूसरा जो स्टेंजा है इस पोएम में वो पाखंड को शो करता है, क्योंकि यहां पर पाखंड किसका शो किया गया है, युवाओं का, अडल्ट्स का। साफ तरीके से ये बात कही गई है कि दे आर प्रीचिंग अबाउट लव बट इट इज ओनली in the imagination, it is not happen in practical world of the adults. That's why it is the matter of hypocrisy, पाखंड की बात है। और इंडिविजुअलिटी की बात कहाँ की गई है, जब वो माइंड की बात करता है, जब वो अपने दिमाग की बात करता है कि वो अपने हिसाब से इसको यूज कर सकता है, in whichever way he wants to use his mind can use. Okay, and producing thought that were not of other people. He can produce his own thought, he can take his own decision without assist anybody else. So we can say in the third stanza there is the thing of individuality. व्यक्तिगत बातें की गई हैं अपने दिमाग के बारे में, युवाओं के पाखंड को शो किया गया है, और तर्क की बात की गई है हेल और हेवन के एग्जिस्टेंस को लेकर। क्लियर हुआ? देखिए, इंडिविजुअलिटी की बात आती है तो वो अपने माइंड के बारे में बात करता है, टॉक्स अबाउट द माइंड, ओके, और कहता है कि प्रोड्यूस कर सकता है अपने खुद के थॉट्स को और अपनी विचारधारा खुद रख सकता है। क्या वो समय था जब उसका बचपन चला गया? तो ये इंडिविजुअलिटी की बात आती है थर्ड स्टेंजा में, जहां माइंड की बात की गई है। रैशनलिज्म, तार्किकता की बात की गई है फर्स्ट स्टेंजे के अंदर, जहां पर तार्किक रूप से पूछा गया है कि क्या हेल और हेवन एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में, क्योंकि किसी भी ज्योग्राफी की बुक में उनका वर्णन नहीं मिलता कि ऐसा कोई स्थान है। और जहां पाखंड की बात होती है तो वो अडल्ट के बारे में कहा गया है कि वो जैसे दिखाई देते हैं वैसे होते नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, I hope you understand very well that in which stanza the individuality is being taken, or it is granted, it is being shown, or rationalism or hypocrisy. So individuality is absolutely in the third stanza, rationalism is in the first stanza, and hypocrisy, as far as we read the poem, we came to know it's about adults in second stanza. So take the next question. See, next question देखिए, what according to the poem
What, according to the poem, is involved in the process of growing up? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. What, according to the poem, is involved in the process of growing up? प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप में क्या इन्वॉल्व रहता है? इस पॉइंट के अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट वी कैन से एज अ पर्सन ग्रोज अप. जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसमें क्या क्या बदलाव आता है? इस पॉइंट में क्या बताया है? एज ए पर्सन ग्रोज अप ही बिकम्स a rationalist, egoist, okay, and hypocrite. हिपोक्रेटिक कह सकते हैं, हिपोक्रेट. ओके, रैशनलिस्ट बन जाता है समय के साथ, ईगो आ जाता है और हिपोक्रेटिक बन जाता है. ठीक है. ही एक्सेप्ट्स नथिंग, that is not logical. That is not logical. Okay, he loses faith in God. He does not believe in hell or heaven. हेल और हेवन में विश्वास वो नहीं करता है. ठीक है. और क्या डिफरेंस आ जाता है उसमें? He becomes very conscious of himself. कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में बहुत ज्यादा सचेत हो जाता है. हेल और हेवन में विश्वास नहीं करता है. ठीक है. He always means what he says. What he says. Okay. He wants to follow his own desires and ideas. He wants to follow his own idea. अपने खुद के विचारों को वो जो है फॉलो करना शुरू कर देता है. और क्या है? He talks of love, but doesn't act lovingly. ये सेंटेंस है हमने लिया है सेकंड स्टेज से. He talks of love but doesn't act lovingly. Okay. In short, he loses all the innocence of his childhood. क्या कहेंगे? In short, he all his innocence of childhood. देखिए, जो ग्रोइंग अप की प्रोसेस है उस प्रोसेस को देखते हुए क्या कहा गया है? पर्सन जैसे ग्रो अप करता है वो रैशनलिस्ट, तार्किक बन जाता है, अहंकारी बन जाता है और पाखंडी बन जाता है. इट्स द नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप अकॉर्डिंग टू द पोएट. ही एक्सेप्ट्स नथिंग बट नथिंग दैट इज नॉट लॉजिकल. उसको हर चीज लॉजिक के साथ चाहिए. ही लूजेस फेथ इन गॉड. He doesn't believe in hell or heaven. He becomes very conscious of his own self. He always means what he says. Okay? He wants to follow his own ideas, own rules, regulations. He talks of love but doesn't act lovingly.
In short, we can say he loses all his innocence of childhood. चाइल्डहुड में जो मासूमियत रहती है उस पूरी की पूरी मासूमियत को वो जो है एक तरीके से समाप्त कर देता है, उसमें वो मासूमियत नहीं रहती. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू राइट डाउन. You can write down answer in your own way. Never try to, learn, try to cram these questions. Okay, take the next question. Second one. Here on your question is, what is the poet's feeling towards childhood? See, what is the poet's feeling towards childhood? Childhood के प्रति बहुत important question है. First you write down. After that I would like to explain it. The poet regards childhood as the period of heavenly innocence. heavenly innocence का पीरियड कहता है कभी इसको. ठीक है. A child sincerely feels that there is God above. There is God above. He is free from all earthly evils. Okay. He truly religious in his soul. Truly religious होता है to his soul, अपनी आत्मा से. Okay. A child knows no hypocrisy. A child knows no hypocrisy. कोई पाखंड वो नहीं जानता. Okay. And after that you can say one more sentence. A child is free from फ्री रहता है किससे? वर्ल्डली possessions. Okay. He is free from any sense of ego, any sense of ego. अहंकार का भाव उसमें दूर दूर तक नहीं होता, कवि ये कहता है इसमें. ओके. He does not think himself to be, ये इंपॉर्टेंट है. He doesn't, okay, he doesn't think himself to be different or superior to others. Okay. In short, संक्षेप में क्या कहेंगे? Childhood is a state of
innocence and purity of heart। देखिए सी क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉइंट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड? एब्सोल्युटली childhood is the best period of human life, the best stage, okay? It's just the prime, the elixir of life. But here, something is being said by the poet, that the poet regards childhood as the period of heavenly innocence। बहुत ही मासूमियत के रूप में इसको लेता है। A child sincerity feels that there is God above। सिंसियरली फील करता है, क्या फील करता है? कि हमेशा जो है उसके ऊपर भगवान है। ओके, ही इज फ्री फ्रॉम ऑल अर्थली एविल्स। जितनी भी सांसारिक बुराइयां हैं उनसे बच्चे का दूर दूर तक भाव नहीं होता। ही इज ट्रूली रिलीजियस टू हिज सोल। ओके, अ चाइल्ड नोज नो हिपोक्रेसी। अ चाइल्ड इज फ्री फ्रॉम वर्ल्डली पोजेशंस। He is always free from any sense of ego. It doesn't think himself to be different or superior to others. In short, childhood is a state of innocence and purity of the heart. And purity of the heart. Okay, so this is the question you have to learn and write. टेक्सुअल जो क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन और है वो देखिए। I hope you write down. क्वेश्चन है कि ओके, which do you think are the most poetic lines? यदि राइम और रिदम की बात की जाए और यदि भाव की अभिव्यक्ति की बात की जाए तो इस पोएम का जो लास्ट स्टेंजा है वो सबसे ज्यादा पोएटिक है। तो लिखिए, द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम आर मोस्ट पोएटिक। ओके, हियर the poet creates a lovely image, of an infant's face. Okay, he conveys the idea, that the innocence of childhood remains only as long as one is infant. Okay, as one grows in years, the heavenly innocence of childhood क्या हो जाती है? disappear। देखिए बच्चे, which do you think are the most poetic lines? poetic lines का मतलब यहाँ रिदम के साथ भी और इन फीलिंग्स के साथ भी। सो यदि हम लास्ट पोएटिक लाइंस की बात करें तो उनका रिदम क्या आता है?
उनका पोएटिक रिदम क्या है? एक है फॉरगॉटन प्लेस, लास्ट में फॉरगॉटन प्लेस, और दूसरा है इन्फेंट्स फेस, इन्फेंट्स फेस। देयर इज राइम एंड रिदम, प्लेस, फेस। लेकिन जो फर्स्ट है इससे पहले वाली लाइन, उसमें क्या है? चाइल्डहुड गो, और लास्ट क्या है? दैट्स ऑल आई नो, ऑल आई नो। देखिए रिदम क्या है। लेट मी टेल यू हियर अबाउट द पोएटिक डिक्शन, ओके, दैट चाइल्डहुड गो, बचपन कहां चला गया? ओके, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो के साथ शुरू होता है स्टैंडर्ड, और ये कहां चला गया? फिर इसकी लास्ट की जो वर्ड्स हैं वो क्या है? फॉरगॉटन प्लेस, और इससे नीचे वाला जो है उसमें क्या है? इन्फेंट फेस, प्लेस, फेस, एंड गो, नो। इट इज द रिदम, it is the rhythm of poetic diction. But let me tell you here, the last four lines of the poem are most poetic. Here the poet creates a lovely image, create करता है कवि of an infant's face, एक नवजात बच्चे के चेहरे की। He conveys the idea. What is the idea? The innocence of childhood remains only as long as one is infant. One is in infant. As one grows in years, जैसे जैसे कोई सालों में व्यतीत होता चला जाता, सात सालें जाती चली जाती हैं, the heavenly innocence of childhood disappear. Okay? तो उसके बाद जो heavenly innocence है वो चली जाती। क्वेश्चन कोई भी हो, उसका आंसर यदि आपने ठीक ढंग से कोई पोएम को पढ़ा है, उसमें गिने चुने थॉट्स हैं, इस पोएम में गिने चुने विचार हैं, वो भाव है। मैंने हर एक स्ट्रेंजर के बारे में आपको अलग से भी डिस्क्राइब किया है, उससे क्वेश्चन जो नरेट हो सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, उनके ऊपर भी डिस्कस किया है, और अलग अलग उसके अंदर वो भी देखा है। वी टेक वन मोर पीरियड ऑफ we have to explain some poetic devices in this poem as well, and in remaining things we will be back very soon for the last part of this poem, childhood. Okay.